हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब एंड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं डिल्यूज़न। डिल्यूज़न क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम वी रीड इन डिटेल। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन, वी आर स्टार्टिंग विद डेफिनेशन। डिल्यूज़न होता क्या है? डिल्यूज़न इज ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी and cannot be changed even when clear proof or evidence shown against it। पेशेंट का फॉल्स बिलीफ होता है। फॉल्स बिलीव चाहे उसको कितना भी प्रूफ दिखा दे, विटनेस कर दें, लेकिन वो मानेगा नहीं। फॉल्स एंड फिक्स बिलीव दैट इज नोट बेस्ड ऑन रियलिटी एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। व्हेन ए पर्सन स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग दैट इज क्लियरली नॉट ट्रू एंड नो लॉजिक एविडेंस कैन चेंज देयर माइंड, इट्स अ delusion। For example, a person believe that government is secretly controlling their thoughts through the TV इवन दो नो प्रूफ एग्जिस्ट। लेकिन पेशेंट को हमेशा ये लगता रहेगा गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग देयर थॉट्स। की करेक्टर्स क्या है इसके? टू आइडेंटिफाई अ डिल्यूजन, रिमेंबर द 3 F। व्हाट द 3 F? 1 फॉल्स, नॉट ट्रू और रियल। फिक्स्ड, अनशेकेबल, नॉट चेंज्ड बाय रीजनिंग। 3 firmly held, strong conviction despite contrary evidence। 3 F होते हैं फॉल्स, फिक्स्ड एंड फर्मली हेल्ड। नेक्स्ट, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है? डिल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, हेलुसिनेशन इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एंड इल्यूजन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलस। सो देर आर 3 different terminology is delusion, hallucination and illusion। Cause, delusion can arise from various conditions: schizophrenia, delusion disorder, mania, severe depression, organic brain diseases। इन सब में डिल्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल बेसिस क्या है? इम्बैलेंस इन डोपामिन लेवल स्पेशली इन द मीजोलिम्बिक पाथवे ऑफन प्ले अ की रोल। टाइप ऑफ इल्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टाइप है विद एग्जाम्पल? नंबर 1, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नंबर 1, बिलीव दैट अदर आर ट्राइंग टू हार्म। पेशेंट को बिलीव रहेगा कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, शक का घेरा जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेबर्स आर प्लानिंग टू किल मी। पड़ोसी मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। सो दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नंबर टू इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, बिलीफ और बीइंग पावर और फेमस। पेशेंट को बिलीफ रहता है कि बहुत ही पावरफुल है, फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गॉड, ही यूजली से दैट आई एम गॉड, आई कैन डू एनी थिंग। तो ऐसा कुछ रहता है उसको बिलीफ, दैट इज ग्रैंड्योर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नंबर 3, delusion of reference, belief that events and people refer specially them, events or people refer specially them। For example, the new anchor is giving me secret message। मुझे ऐसा लगता रहेगा कि people मुझे रेफर करके कुछ लोगों को बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंकर इज गिविंग मी सीक्रेट मैसेज, न्यूज एंकर, दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, delusion of control. Number 4, delusion of control, belief that their thoughts action are controlled by others। Your thoughts and action are controlled by others। Next, delusion of guilt and sin, belief of being responsible for something terrible, that is delusion of sin। For example, I caused the earthquake। Next, nihilistic delusion, belief that self-worth does not exist, self or world does not exist, that is nihilistic
delusion. For example, I am already dead. That is nihilistic delusion. Next is somatic delusion. False belief about body function. बॉडी फंक्शन के जैसे कि माई स्टमक इज़ फुल ऑफ वर्म्स, ऐसा कुछ रहेगा कि उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है. दैट इज सोमेटिक डिल्यूजन. नेक्स्ट इज इरेटोमैनिक डिल्यूजन. बिलीव दैट समवन यूजुअली ऑफ हायर स्टेटस इज इन लव विद दैम. जैसे द फिल्म स्टार लव्स मी सीक्रेटली. सो दैट इज इरेटोमैनिक डिल्यूजन. Next, religious delusion. That is false spiritual belief. Patient will have false spiritual belief. जैसे I am chosen prophet. तो हमारे कितने हो गए? नंबर 1, delusion of persecution, कि ऐसा शक रहेगा पेशेंट को कि दूसरा उसको हार्म करना चाहते हैं. नंबर 2, delusion of grandeur, बीइंग ऑफ फेमस एंड पावरफुल, ऐसा कुछ रहता है उसको. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन्स बिलीव दैट इवेंट्स और पीपल रेफर स्पेशली दैम. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बिलीव दैट देयर थॉट्स एंड एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स. डिल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड सिन, बिलीव ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग नॉट लॉजिकल या टेरिबल. नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ nihilistic. Number 6, being belief that self or world does not exist. Somatic में false belief about body function. Erotomanic में belief that someone usually of higher state is love with them. And 9 is religious false spiritual belief. Stages क्या होती हैं? Delusional mood, delusional idea and delusional symptoms. Suspiciousness is for feeling that something is wrong. Idea, a specific false belief start forming, and delusional system belief become organized and firmly fixed. नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो नोट सेट रिपीटेड एमसीक्यूज से रिलेटेड नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन सी है? फर्स्ट, डू नॉट आर्ग्यू और ट्राई टू प्रूव बिलीव रोंग. पेशेंट को आर्ग्यू नहीं करना है कि वो गलत है. 2, acknowledge feelings. Feelings should be acknowledged. Avoid discussing the delusional repeatedly. Distract or redirect to reality-based activities. Maintain trust and ensure safety. Administer antipsychotic medicine. And next, encourage reality testing. और कॉमन ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं? हेलोपेरिडोल, olanzapine and clozapine. This help reduce delusional intensity and psychotic symptoms. And exam tricks कौन कौन से एक बार बता देती हूँ मैं आपको. Delusion is a disorder of thoughts. Most common type delusion in schizophrenia is persecutory. Delusion seen in mania is grandeur. Patient believe the body has changed into the strange way is the somatic delusion. And delusion that world does not exist is nihilistic delusion. So friends, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.